teachers and my dear friends. I hope you all know that we are here on a virtual platform to bid final goodbye to our dearmost ma'am, Ma'am Nisha Sharma. It's been more than 25 years since her association with this prestigious school, and I feel needless to say that she has developed an invincible bond towards this institution. However, I would like to take this opportunity to share the golden moments of her life, which imprints an indelible mark in the journey of her life. Retirement is a special occasion in everyone's life. So today, Ma'am Nisha Sharma, who has served Dyal Singh Institution for more than 25 years with her remarkable services, is retiring. Ma'am Nisha Sharma was born and brought up at Yamunanagar. She is the master of her subject economics, as she has done MA, MPhil Economics and B.Ed. Her add-on achievements are: she has attended national level NCC camp at Kodaikanal, Tamil Nadu and was awarded the Best Board of Command Cadet at national level. She was also the best player of basketball and hockey in MLN College, Yamunanagar. Her first appointment was at DAV College for Women Karnal in 1984, and thereafter she served at DAV College for Girls Yamunanagar, MLN College Yamunanagar and subsequently MLN Senior Secondary School Yamunanagar before joining Dyal Singh Public School Karnal in the year 1995. She was awarded the Best Teacher Award at the state and national level with the Certificate of Excellence by Human Resource Ministry, Government of India. She was also awarded the Best Head Examiner in Economics by CBSE Panchkula for her CBSE checking work. She was also selected as a resource person for delivering a lecture in economics by CBSE Panchkula. In addition to being a role model in teaching, whose students got 100 marks in CBSE exams many a times, she has also served as in charge of Social Service Club and Tours and Travel Club of Dyal Singh Public School, Karnal. Her husband, Dr. Sanjeev Sharma, served as Associate Professor and Head of the Department at Dyal Singh College, Karnal. She is blessed with two sons, Sanchit and Archit, and both are well placed. Sanchit, her elder son, has done his M.Tech Mechanical Engineering from Thapar University, Patiala, and now he is working as mechanical engineer in Northern Railways, Yamunanagar. Her younger son Archit has done MBA from ICFI University, Hyderabad, and now he is working as credit manager in IDFC Bank, Bangalore. Thank you, ma'am, and have a nice journey ahead. Farewells are always occasions of mixed emotions. We feel happy that we have performed our responsibilities with commitment and sincerity. We feel sad and tearful on leaving our loving colleagues and friends. We are excited that we will have our own free time to spend at our own will, but then that rushing through the household chores in the morning will be missing. But one feels happy that one is retiring with grace after dedicated service of so many years. Mrs. Nisha has rendered 24 years of service to this institution. She was a combination of strictness and concern for her students. Involving herself in her students and colleagues had made her a favorite of everyone. No activity happening in the class could miss her eyes. She was ever vigilant. Her love and concern for everyone will be missed always. We wish her good health and happiness in future. This song is dedicated to her. We will love her always. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला
अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरमपम धारा तो बहती है बहकी रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाए माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे फूल। ला 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 ला। थैंक यू। Dear Nisha ma'am, it's not easy to say goodbye to a person with whom you have a long association. Today, on your special day, I would like to take this opportunity to express appreciation for your hard work and dedication. In addition to being a fantastic colleague, you have always been a great friend to many. You have always worked with commitment and responsibility and have motivated students to participate in curricular and extracurricular activities along with studies. You had a very long association with school, and good times spent with friends become good memories, and memories lasts forever. वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। I wish you good luck and wish you much joy and happiness as you begin a new chapter in your life. Congratulations. Thank you. Dear friends, I feel privileged to avail the opportunity to speak a few words on the occasion of superannuation of our friend and colleague Mrs. Nisha Sharma. Today is an occasion of such mixed feelings, joy, as Madam Nisha is going to enter a new phase of life after successful completing her tenure of 25 years in Dayal Singh Public School. Sadness is because the institution will lose a person with the golden virtues. Nisha ma'am had been a true friend, mentor and guide for students as well as for colleagues. Like a coconut, hard from outside yet soft, sweet, compassionate and kind from within. A strict disciplinarian, she was a standing example for the pupils. Helpful, kind and approachable, she always worked hard to bring out the best out of her students. She had been the master of her subject and learning became easy with her guidance and motivation. Her role in Social Service Club cannot be forgotten. She instilled deep into the minds of children a feeling of charity and sensitivity towards the orphans, old, poor and deprived. One more aspect of her personality, which is very rare in most individuals, is the fight against injustice. She was straightforward in giving her opinion wherever she saw anything getting wrong. Nisha ma'am, it is very hard to express just how much your words of loving support means to me during the most difficult time of my life. It is hard to imagine how different life is going to be for me without the support of treasured friend like you. I deeply intend to you for walking this road with me. Thank you, ma'am. Nisha ma'am, you are a great teacher but also an excellent homemaker, wonderful wife to equally wonderful man with beautiful kids. Every teacher and student of our school will miss you, but
Time has really come to enjoy these retirement years with peace, surrounded by family love. I wish you a happy and prosperous phase of time ahead. Thank you, ma'am. Respected academic advisor ma'am, principal ma'am, teachers and my dear friends. Today I take the privilege to express my heartfelt feelings for Madam Nisha Sharma on the occasion of her superannuation. Words will fall short to describe the role played by Madam Nisha Sharma in making the future of the students. She made the subject interesting by correlating it to the life situation. She inculcated moral values and a spirit of social service which will remain deep in the hearts of the students. Efforts made by Madam Nisha Sharma cannot be forgotten. She has left the footmarks for us to follow. May she prosper in her life and get a happy and new active phase of her life. No one can replace her as she had been unique. I pray to God to shower His blessings on her and wish her a peaceful twilight years. Thank you. To the respected academic advisor Latra ma'am, Principal Shushma ma'am, and my fellow colleagues. Today we have to bid goodbye or farewell to our highly valued teacher Nisha ma'am. However, this is an excellent opportunity to offer thanks for how our Nisha ma'am has so much expertise and passed across some unique skills to the students. Though it is very sad for bidding goodbye to someone who has become more of a colleague, but we still need to use this chance to demonstrate our gratitude to her. The 23 years she had spent offering the best and right skills on to the students. She is a great counselor in teaching profession, and you made the students push their limits in solving the difficulties. We appreciate when the students were facing challenges, you stood with them. All teaching is founded on ethics, dignity, truthfulness, fairness, and responsibility and freedom. Ma'am, you are really a mixture of all these qualities, not in words but in deeds. You were highly committed to the standards and ethics of the work. You treated other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated. Ma'am, you always refrain from losing unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities and refrained from allowing consideration of caste, creed, religion, or race in their professional endeavor. You always stood beside every colleague when they are in strong need of any type of counseling or financial matter. You have true human values of helping all who are in need of financial help by organizing a social service club and kept active till today by involving not only the teachers but also students, and in this way blossom the virtue of helping the society. You not only kept duties over the rights but always stood by teaching and non-teaching staff if found that some injustice is going with them without caring the consequences. This is a very big quality, ma'am, in you, because otherwise generally all like to save their skin. In the end, I would like to thank you, dear ma'am, for being such a clear and gold-hearted and unforgettable colleague of mine. Your family can have more time and fun with you now. No one can erase your professionalism, affectionate gestures, and sweetness to us that are engraved on our hearts. On behalf of our whole school staff, we wish you the best of life, ma'am. Thank you. कंगना तेरा नहीं सानू तेरे इशारे कंगना तेरा नहीं सानू तेरे इशारे
CB, Apache Indian, shit that they call toll station. ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਬਲਣੋਂ ਸੰਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਿਲ ਮੰਗਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਬਲਣੋਂ ਸੰਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਿਲ ਮੰਗਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਬਲੌਰੀ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਕੰਨੀ ਝੁੰਮ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ Hello everyone, I am feeling very honored to say few words on the farewell day of our teacher Nisha ma'am. It has been rightly said that we may end up forgetting lot of people in our lives, but not our teachers. I know it is very painful to say goodbye to you ma'am, who has always been less of a teacher and more like a mother. I remember whenever I faced any problem, ma'am always helped me to sort out the same. She had instilled that confidence and courage for public speaking and always used to put in great efforts to impart skills and knowledge among us so that we can achieve great heights in future. Even in such times of COVID-19, when everyone has been separated from each other and the mode of teaching also shifted to online, even in such situations, ma'am warmth and care for everyone made all of us feel as if we still are studying in same physical classes and ma'am is with us. She had always motivated us for social welfare activities through various distribution events, chabils and much more. At last, I pray to God for ma'am good health and long life. Thank you so much. Good morning, everyone. Today I am going to express my feelings for Nisha ma'am in the form of a poem. I hope, ma'am, you like it. सौभाग्य है, सम्मान है, संतुष्टि है, पहचान है, भावुक हैं, उदास हैं, फिक्र है, हर्ष है, साथ ही हर्षोल्लास है, आशाएं और अभिलाषाएं हैं, भावनाओं का अंबार है। एक ही समय पर कितनी तरह के एहसास दिलाती है सेवानिवृत्ति, नौकरी का वो पहला दिन याद दिलाती है सेवानिवृत्ति। संस्था की सेवा में जीवन समर्पित किया, बदले में संस्था ने सुरक्षित भविष्य दिया। नए दोस्त थे बने, सहयोगी बने, शुभचिंतक बने, संग उत्सव बनाए, ठहाके लगाए और जाने ही कितने पल बिताए। हर्षोल्लास का एहसास दिलाती है सेवानिवृत्ति। स्कूल से रिश्ते की जो डोर बंदी थी, उसके खुलने का समय आ गया है। जिस काम से नाम हुआ, उस काम से आराम का समय आ गया है। सोचे तो बिना काम के जिंदगी कैसी होगी, पर आगे के सफर में अनेकों नए पड़ाव आएंगे। घर के हर एक कोने को फिर से संजोने के बहाने लाएंगे। जिंदगी के पहिए तो दौड़ते ही रहेंगे। एक मंजिल का रास्ता तो तय कर लिया, पर मंजिलें अभी और भी होंगी। सेवानिवृत्ति एक बंधन से मुक्ति है, तो अब नए बंधन बनाने का मौका है। दोस्त कम कहाँ होंगे, नए रिश्तों में जुड़ने का आपने सोचा है और जिंदगी का दायरा बढ़ाने का मौका है। आपकी वो स्कूल के दिनों को तराशूं तो याद आया वो स्टाफ रूम की गपशप, वो बातों का शोर, चाय की टेबल पर स्नैक्स का जोर, सर्दियों की नम धूप में पेपर्स चेक करने का मजा, मूंगफली के दानों के चटकने की रजा, कैंटीन की पार्टियां, वो बारिश में वहां तक जाना, राज भैया से थोड़ी छतरी का सहारा ले लेना। क्या वो पल थे, क्या वो सौगातें, प्रतिबिंब सी बनकर छलकेगी यादें। 12वीं की फेयरवेल के नज़ारे का याद आना, वो बच्चों का डिस्को और उनके साथ फोटो खिंचवाना। एग्जाम टाइम में वो आपके इकोनॉमिक्स के टिप्स देना, आपका डांटना, आपका प्यार, जाने ही कितने कॉमर्स के बच्चों का अच्छे कॉलेजेस में जाना और आपके मन को हर्षित कर जाना, जब उन सब का मिठाई खिलाना। सोशल सर्विस क्लब में वो सामान इकट्ठा करना,
आपकी जद्दोजहद में कभी ये मंगवाना कभी वो मंगवाना, अनाथ आश्रम और बेबस लोगों तक सब पहुंचाना। सच में निशा मैम, आपको ये सब बहुत याद आएगा। बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल्स बनवाना, उनके प्रैक्टिकल्स में नंबर लगवाना, एक्सटर्नल से चाय पे चर्चा, बच्चों पे ढेर सारा प्यार लुटाना, उनको समझाना बुझाना आपके मन के कोने में हमेशा रह जाएगा। आपकी आने वाली भावी जीवन की सुखमय कामना करती अब मुझे दो विराम। निशा मैम, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। Hello, ma'am. We need to use this precious chance to demonstrate our gratitude towards you. We feel fortunate enough to have you by our side always. We are so grateful that you have taught us with sincerity, zeal, and passion. You have also prepared us for the boards and for further life. You not just taught us economics or business studies, but the life lessons you gave, the morality you taught, and the fun we had at social service events is incomparable, and all thanks to you. We will never get a mentor, a guide, a counselor, a teacher like you. Thank you so much for making our last trip amazing. The most important thing, we would like to say that we feel highly privileged that we सभी को नमस्कार और विशेष रूप से मैं नमस्कार कर रहा हूं निशा मैम को। निशा मैम, आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। आपने दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, दयाल सिंह कॉलोनी, करनाल को जो 25 वर्ष दिए, निसंदेह ये एक बहुत लंबी यात्रा रही आपके अध्यापन की। और मैंने देखा है कि आपने जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी है, और शिक्षा ही नहीं, उनको नैतिक मूल्य जो प्रदान किए हैं, वो निसंदेह वो सभी बच्चे आपको हमेशा याद करेंगे, आपको स्मरण करेंगे। क्योंकि वर्तमान में हम शिक्षा के साथ साथ यदि बच्चों को नैतिक मूल्य भी प्रदान करते हैं तो वो चिरस्थायी हो जाते हैं। आपने शिक्षा के साथ साथ सेवा के कार्यों में आप लगे रहे और आपने असहाय एवं ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए तत्परता से, तल्लीनता से, तन्मयता से कार्य किया। आपने क्लब के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से जिस प्रकार से समाज की सेवा की, वो अविस्मरणीय है, असाधारण है, अतुलनीय है। मैं समझता हूँ कि ये तो एक जीवन का पड़ाव है जहाँ से आपको सेवानिवृत्ति मिली है। तो मैं आपके आगामी जीवन के लिए प्रभु से कामना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से समाज के कार्यों में लगे रहें। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको प्रणाम। everyone, as you know, today is the day of retirement of निशा मैम। चलिए थोड़ा सा हंस लेते हैं। पति अपनी पत्नी से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पत्नी, तो क्या मैं आपसे नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ पति, पर तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, तो आप ही तो मेरी दुनिया हो। बेटा अपनी माँ से, माँ मेरे सारे दोस्त आज घर पर आ रहे हैं, तो मेरे सारे खिलौने, जितने भी खिलौने हैं, प्लीज़ आप अपनी अलमीरा में छुपा दो। माँ, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे सारे दोस्त चोर हैं? नहीं माँ, वो सब अपनी अपनी चीज़ें पहचानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बॉस अपने एम्प्लॉय से, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम खाना बना रहे हो। फिर खाना बनाने के बाद तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? एम्प्लॉय, सर मैंने कॉल बैक किया था तो आपकी पत्नी ने बताया कि आप बर्तन मांज रहे हैं। मैं निशा मैम से इतना ही कहना चाहूँगी, आपकी रिटायरमेंट पर देते हैं हम दुआ, खुशियाँ आपके दामन से कभी ना हो जुदा।
खुदा की रहमतों में कभी कोई कमी ना आए, आपके होठों की मुस्कुराहट ना जाए, आपके होठों की मुस्कुराहट ना जाए. So wishing you all the best in the next phase of your life. Love you and miss you, Nisha ma'am. काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए. काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए. अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए. The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last. वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते. वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते. जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते. Thank you, ma'am. Which is an adventure, and I'm sure you're gonna rock that too. I would just like to thank you for all the kindness and wisdom over all these years. You have made a real difference in the lives of the students you have taught. Congratulations and warm wishes for the retirement. First of all, congratulations for completing so many years of service with school. आपने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल हम बच्चों को दिए जो कि बहुत इंस्पायरिंग है. हम एज अ बैच बहुत लकी थे कि हमें आपसे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि आपकी एक ऐसी क्लास होती थी जिसमें हम ना सिर्फ पढ़ाई करते थे बल्कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखते थे कि अपने आप को कैसे कैरी करना चाहिए. पढ़ाई के अलावा हमें को करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या क्वालिटीज़ हम में होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब आपने सिखाया है. अभी भी ऐसे कई इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर आपकी याद आ जाती है, आपके लेसन्स काम आते हैं तो फिर आपकी याद आ जाती है. वी मिस यू मैम, और आपकी फर्दर लाइफ के लिए वी विश यू ऑल द बेस्ट. मे यू लिव अ गुड लाइफ, मे यू कंटिन्यू टू लिव एन इंस्पायरिंग लाइफ. मे गॉड ब्लेस यू. एंड अगैन मैम थैंक यू सो मच. जो भी आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. Hello everyone. It has been rightly said that good teachers teach not just by reading our textbooks, but by lighting up our imaginations. Besides teaching us the basic knowledge of the concepts and facts, ma'am made us learn various important lessons of life. You boosted me to break the ice of stage fear and always motivated so that I achieve great heights in future. It was because of your blessings and wishes that I got admission in my dream college. At last, I just want to say that we will miss you, ma'am, and I pray to God for your long health. Happy farewell, ma'am. Stay safe and stay happy. Thank you. हेलो मैम, गुड इवनिंग. तो जैसे आप बोलते थे हमें कि स्कूल टीचर्स जितना ध्यान कोई नहीं रखेगा, इतना कोई नहीं पूछेगा. जेन्युइनली मैम सच में वही है. जितना ध्यान आप सब ने हमारा रखा, जितना ध्यान आपने हमारा रखा स्कूल में, स्कूल स्टडीज़ से रिलेटेड या वैसे जैसे आपने हमें गाइड किया स्कूल के बाद भी, कॉलेज प्रोसीजर्स में भी. मैम जितना आपने पूछा कि कहाँ एडमिशन हुआ, जितना आप सबने ध्यान रखा, जैसे आप हमें सोशल सर्विस ट्रिप्स पे लेके गए, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, जो आपके साथ हम जयपुर ट्रिप पे गए मैम, एवरीथिंग वाज सो 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 ब्यूटीफुल. अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू यू मैम. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ टीचर लाइक यू इन आवर लाइफ एंड वी ऑल रियली रियली लव यू मैम. मैम ज़रूर आपको मिलने हम ज़रूर आएंगे एक बारी तो. A very happy farewell to you, ma'am. Hello, ma'am. You have
are all bidding farewell to Mrs. Nisha Sharma. We all will be missing that ever smiling face greeting us every morning. Ma'am, your guidance and encouragement have always helped us to move further in life with confidence. Every single social work, Ganpati festival, farewell is incomplete without your active involvement. Your footprints can be seen everywhere. With this, I just want to end up my speech. I just wish that ma'am will get every happiness of life. Ma'am, happy retirement. These two lines are dedicated to you. स्कूल की रेल गाड़ी में चलते चलते बहुत सारी कहानियां रची थी हमने, और कुछ खास कहानियों में एक खास रोल तो आपका भी था। सोशल सर्विस के ट्रिप्स से लेकर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का एक अनोखा सफर। आपकी प्यारी कहानियां सुनते सुनते प्यारी डांटों का भी कुछ असर। मैम, मैं तो आपको कभी नहीं भूलूंगी और ना ही मेरे दोस्त। सच कह रही हूं, ये दयाल सिंह की दीवारें भी आपको कभी नहीं भूलेंगी। Thank you for existing. Thank you for being a part of this organization of the school, and thank you for motivating several lives. Keep this up, ma'am. All the best. Thank you so much, ma'am. मैं निशा मैम को तब से जानती हूँ जब वो मेरी दीदी की इकोनॉमिक्स टीचर थी 11th में। तब मुझे लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बट जब मैंने खुद कॉमर्स ली और मेरे टीचर बने तो मुझे पता चला कि वो कितनी स्वीट है, कितने अच्छे हैं। उनकी क्लास में बहुत मज़ा आता था, वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, बहुत सारे रियल सिनेरियो सुनाती थी, और थियोरेटिकल पार्ट तो इकोनॉमिक्स का कभी घर आके पढ़ना ही नहीं पड़ा, वो क्लास में ही सब कुछ याद करवा देते थे। और वो एक लौती टीचर है जिनका बर्थडे मुझे याद है, क्योंकि उनका और मेरा बर्थडे सेम डे आता है, 17 December। And I love you, Nisha ma'am. Hello ma'am, came to know about your retirement ceremony. So I, on behalf of my entire batch of 2017-18, would like to congratulate you for your long, tireless and wonderful journey with the school and your commendable service to school and society as a whole. Personally, I am very thankful to you. You believed in me, taught many life learning lessons, and most importantly, you encouraged me to be the best that I can be. So I would like to wish you all the very best for this new chapter in your life. Hello ma'am, first of all I congratulate you on your retirement, and I hope you are fine in this COVID times, and you are such a mentor to me during my entire school life, particularly in 11th and 12th. I hope many of the students who are motivated by you, the charism and the aura that you have, and I feel that the way that you taught in the class and is not only about studies but all apart from the studies, how to go about in your life, how to achieve those things, and these are the things that matter in everyone's life, right? So this is the thing that I want, like learn from you, how to approach the things, how to go about, how to build your personality, and these are the things that I think that an ideal teacher should have, and I clearly saw you as an ideal for me. Thank you. No. Stay happy, stay healthy.
चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। I love you, Nisha ma'am. When I started in school, whatever I achieved today seemed very difficult to me. But through your constant guidance and support, I think I am ready to face the challenges life will throw at me tomorrow also. Thank you for being a guiding light, not just for me, but thousands of students who achieve greater heights under your encouragement and care. आपके साथ कुछ यादें, कुछ लम्हे बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले थे, तजुर्बे तमाम मिले। Ma'am, at the end I would like to say, retirement is not the end of the road, but a turn in the road. A second inning of inspiring and motivating thousands of students. Thank you so much, ma'am. All the very best. Hello Nisha ma'am, I am Triveni, ex-student of batch 2004 and 5. मुझे तो आप जानते ही हैं, बट आज मेरे साथ कुछ उस टाइम के वो दोस्त आ रहे हैं शायद जिन्हें आप भूल गए हो, बट दे स्टिल रिमेम्बर यू एंड दे आर हियर टू गिव यू गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर लाइफ. सो हियर यू गो. Hello Nisha ma'am, how are you? Congratulations ma'am on your retirement. Have a wonderful life ahead.